चुक हार लियो उसके दुख। सुरेंद्र फूलमती को लगा दिया चूना, क्या हो गया मुन्ना। कितने मंत्रों के पीछे कितने षड्यंत्र। पहले पैसा दिखा फिर अपनी समस्या बता। कदमों से कदम बढ़े मगर रंग बदले नहीं। साधु वेशभूषा से नहीं स्वभाव से होता है। शुद्ध हृदय से होता है, शुद्ध भाव से होता है। कौन कहता है आदमी के हाथों की लकीरों में उसकी तकदीर होती है। कौन कहता है आदमी के हाथों की लकीरों में उसकी तकदीर होती है। नहीं जिनके हाथ, क्या उनकी तकदीर फ़कीर होती है। क्या उनकी तकदीर फ़कीर होती है। एक बार पुनः पाखंड खंडन करती हुई इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। मेरे पास नहीं, कभी डांस आएगा। आंखें खोल देने वाली। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सब रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर।
जाओ जी, मन दीद कराओ जी, राह क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर चले उन्हें भंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़े में जागी दो कणी फिर चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा एक सीरे झुम 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 मर बिगड़े में जागी दो कणी फिर चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा एक सीरे झुम 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 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰਾਂਝਿਆਂ ਤੇ ਹੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਢੋਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ। ਆਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਭਰੂ। ਨਬਜ਼ ਫੜਨੀ
जवानी ने छल मारी और साडा चादरे सवाउण नूं जी करिया सप खुंडे ते काटवां नूं तेल ला के और धुप वाह लिशकाउण नूं जी करिया और साडे ढोल नूं सारा ही जग जाने भर भर खड़काउण नूं जी करिया ओए असीं किवें आ भंगड़े ते राज करदे अज फिर दिखाउण नूं जी करिया दिलां विच इहो जिहे जज्बे ते बुढ़ियां ते मिठी मिठी मुस्कान लैके पंजाब दे मशहूर गभरू पेश करन जा रहे हैं पंजाब दा जगत प्रसिद्ध लोक नाच भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा
Today, we take you inside one such institution, the Office of the Accountant General, A&E, Punjab and Union Territory, Chandigarh. This office is the state's financial timekeeper. From building roads to releasing pensions, is documented with accuracy, integrity, and transparency. But how did this office come into being? To understand that, we need to travel back in time. Established in 1947 in Shimla, the Office of the Accountant General, Punjab, emerged in the wake of India's partition. In 1966, it expanded to serve Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh before being trifurcated into 3 independent offices. The institution shifted to Chandigarh in 1969 and in 1984 was reconstituted as a dedicated accounts office after the bifurcation of audit and accounts. Since 1990, it has proudly operated from its own premises, continuing its legacy of accountability and service. Imagine keeping track of every financial activity of the government, every payment, every receipt, every transfer, 365 days a year. That's exactly what the Accounts Wing does. Welcome to the Accounts Wing, the backbone of financial transparency, discipline, and accountability in the state. Here, the entire financial activity of the state is compiled with precision, month after month, year after year. From monthly civil accounts to annual finance and appropriation accounts, this wing transforms chaos into clarity and data into decisions. But their role doesn't stop at the state level. This office has also been entrusted with a mission of national importance: the compilation and preparation of CFRA accounts for all I and AD offices across India. It is a task that demands precision, consistency, and unmatched technical expertise. And through rigorous treasury inspections with full implementation of the One India One system, they safeguard the financial discipline of the state. Since July 2024, the team has achieved what many thought impossible. The monthly civil accounts of the Government of Punjab are now prepared by the 10th of every month, a dramatic improvement from the earlier timeline of the 25th. The wing also led the way in bringing the Works and Forest divisions on board the NTI-FMS online module, ensuring that monthly accounts now arrive digitally, with 100% compliance since June 2025. This is the Accounts Wing, working quietly, diligently, and relentlessly to uphold financial integrity, so that every rupee is accounted for. To build coordination, the office conducted DTO workshops, bringing together key stakeholders. In 2025-26, 2 such workshops were held. The first quarterly workshop on 30th April 2025 and the second on 16th July 2025. On 30th October 2025, a dedicated workshop was organized for sister divisional accounts officers, bringing together a wider pool of expertise from across the state. A total of 40 participants attended the session. A lifetime of service deserves dignity, and ensuring that dignity is honored timely, transparently, and without struggle is the responsibility of one crucial pillar of this office, the pension wing. There was a time before 2011 when every PPO, every authority, every correction had to be handled manually. But change began in July 2011 with the launch of the System Automated Initiative, the SAI Pension Program. From that day forward, PPOs and related authorities became system generated. The status of every pension case started being uploaded daily on the office website. On 1st April 2021, the office began issuing digitally signed EPPOS directly through the IHRMS portal, eliminating paperwork and delays. With the implementation of the e-pension module on 1st April 2023, every fresh pension case started reaching this office online, end-to-end, completely through IHRMS. From 4th March 2024, pensioners could download their EPPOS directly through the Locker anytime, anywhere. But the true scale of reform lies in the past, the archives. Over 4.82 lakh files
containing 3.26 crore pages of pension records from 1947 to 2023 have been digitally scanned, indexed, and preserved. Today, decades-old records are available with a single click. This monumental task was not completed during office hours alone. Staff worked tirelessly, even on Saturdays and Sundays, to validate these records and build a digital legacy for generations. A dedicated grievance redress cell listens to retirees whether they walk in, call, or write. Regular pension adalats held across Punjab bring solutions directly to the doorstep of pensioners. And quarterly virtual sensitization sessions train pension sanctioning authorities, improving their understanding of rules and ensuring that cases are prepared correctly the first time. The results speak for themselves. Fresh pension cases that once took up to 30 days, as per the Citizen Charter, now get processed within just 15 working days. To keep the workforce inspired, the office regularly undertakes initiatives that nurture unity and a sense of shared purpose. On Independence Day 2025, to involve families and encourage creativity among young minds, a painting competition for children was organized, inviting them to express themes of freedom and patriotism. To support emotional and mental well-being at the workplace, the office invited the Brahma Kumaris for a spiritual session. On 21st June 2025, the office observed the 11th International Yoga Day with enthusiasm. Staff members participated in a guided yoga session led by an instructor, practicing postures and breathing techniques. The office proudly hosted the North Zone Cricket Tournament, welcoming teams from multiple regions. The matches were played with fairness and team spirit, turning the event into a vibrant display of sportsmanship and inter-office unity. As the office continues to strengthen its digital foundation, a significant step forward has been the establishment of a dedicated EDP lab, a center that enables regular in-house training, provides a structured space for departmental examinations, and hosts workshops that enhance coordination with key stakeholders. The office is celebrating Audit Week 2025. To mark the occasion, 2 focused workshops were organized within the office. The first addressed a critical and sensitive area, prevention of sexual harassment of women at the workplace. Through discussions and guidance, the session emphasized creating a safe, respectful, and dignified work environment for all. Alongside this, another workshop introduced staff to the evolving world of technology, a session on artificial intelligence and machine learning, highlighting their uses, relevance, and potential to transform administrative processes. For decades, this office has guarded the financial backbone of the state, a silent force ensuring transparency, accountability, and good governance. This is our story, a story of dedication, precision, and service to the nation. निरोधक गतिविधियां, पारदर्शिता, कार्मिकों का मेहनत कश रवैया, इन्हीं को प्रारंभ से अभी तक संजोए हुए ये थी हमारे कार्यालय की डॉक्यूमेंट्री क्लिप। एक बार पुनः कार्यालय के इस मेहनत कश रवैये पे अभिनंदन, तालियां। जे तू भंगड़े दा राजा, जे तू भंगड़े दा राजा तां मैं गिद्धियां दी राणी, तड़के उठ के दुध रिड़कदी नाले पढ़दी वाणी, ओ कुड़ी पंजाबण बई दूरों जावे पछाणी। धम्मी वेले चाटियां च गुंजण मदानियां, रूप नाल रजियां पंजाब दियां राणियां, मक्की दियां रोटियां ते सोने दियां वालियां, जट्टियां पंजाब दियां डाढियां सुखालियां। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। आओ जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करते हैं इन्हां सोहणियां मुटियारां दा ते बह के आनंद माणो।
जेडी पे बैठ के मैं काटती कसीदा जेड पे बैठ के मैं काटती कसीदा कट दिया रेशमी रुमाल मैंने रंजना तेरी मेरी जोड़ी मैं तेरी मेरी जोड़ी है कमाल मैंने रंजना 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 तेरी मेरी पंडाल प्यारी मेरी हड्डी है करीर दा पंडाल प्यारी मेरी हड्डी है करीर दा केड़ी गल्लों नी केड़ी गल्लों रस के राजा नी हीर दा 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 तेरी कुर्ती नू लगे ने सितारे नी नचे किते विच पैण लिशकारे नी मुंडे पट सुटे पिंड ते सारे 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 नी मुंडे ब्यालक दे विच पापी आई ले सूही फुलकारी के पी तोते ने छालक दे विच मारी 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 के पी तोते ने हाले खू चले पंजाली खू चले हाले खू चले पंजाली खू चले तू मोड़ मेरी मना वे हमारियां दे 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 जेटी में मुंगी दा बूटा जेटी में मुंगी दा बूटा ओनू तलकियां किन डांटा कड़ा दे माए मेरी चढ़त बाका 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 नीपा बुके वांगू मचदी मचड़े दे सारे मुंडियां नू जचदी जचड़े दे कहंदी सारी रात नचड़ा नचड़े दे किता सारी रात मचड़ा मचड़े दे किता सारी रात मचड़ा मचड़े दे किता सारी रात मचड़ा मचड़े दे किता सारी रात मचड़ा Out of their busy schedule to be with us. I would also like to thank Vivek Gupta sir, Arjuna Gupta ma'am and all the group officers for gracing the occasion by giving their valuable time. My heartfelt thanks to the families of the office for being here today. Your presence has added joy and warmth to the celebrations. Following this, I would like to extend a sincere thanks to our Accountant General Ma'am, Pipti Ma'am, for her valuable guidance
and constant motivation and support at every stage of the event. Ma'am, your leadership has been our driving force. We are truly thankful for your trust and encouragement. A big thank to all our participants and performers who have showcased their remarkable talent and worked tirelessly to make today's event a memorable one. I am also grateful to our organizing committee. Please join us for dinner. हो जाएगा। मैम सामने, मैम सामने कैमरा लोग। हाँ जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वही तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि हम लोग ये उससे पहले बचपन में देखते थे यहाँ पे देखो। सर इधर आज